Hi students, welcome back. In this session, we are going to discuss a beautiful poem written by John Keats, A Thing of Beauty. John Keats, he was born in 1795 and he was an unfortunate poet who died in 1821 at the age of 26. Although trained to be a surgeon, he decided to devote wholly to poetry. He was a British romantic poet. In this beautiful poem, A Thing of Beauty, John Keats describes the importance of a beautiful thing. He describes 5 features, 5 important things in the poem. Number 1, importance of a beautiful thing. Number 2, benefits of a beautiful thing. Number 3, the problems that we face. Number 4, the beautiful things in the world. Number 5, the most beautiful thing in the world. The importance of a beautiful thing, benefits of a beautiful thing, the problems we face, the main beautiful things in the world, the most beautiful thing in the world. Look, a thing of beauty, a beautiful thing, is a joy forever. हमेशा के लिए खुशी की बात है. So whenever you see a beautiful thing, जरूर you will feel happiness. Number 2, its loveliness always increases. इसका प्यारापन हमेशा बढ़ते जाते हैं, कभी डिक्रीज नहीं होगा. Number 3, it will never pass into nothingness. Nothingness means शून्य, zero. इसका प्यारापन कभी जीरो पे नहीं जाते. तो 3 पॉइंट से जॉन कीट्स ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं the importance of a beautiful thing. Number 1, its joy forever. Number 2, its loveliness always increases. Number 3, it will never pass into nothingness. Next point, what does a thing of beauty provide us? Number 1, it will keep a bower quiet. Bower means a shady area. Chaya. कैसे छाया? Quiet means the peace. शांति का छाया देते हैं. Number 2, sleep full of sweet dreams. अच्छा नींद देते हैं with full of sweet dreams. Number 3, अच्छा health देते हैं. Number 4, quiet breathing. आरामदायक breathing. Tension free breathing. Tension free life. So ये पार्ट देख लेना. What is the importance of a beautiful thing? Joy forever, loveliness increases. Number 3, never pass into nothingness. What does a thing of beauty provide you? Number 1, quiet power, sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. So we have noticed the importance and the benefits. इसलिए, since it has some importance, हम क्या करते हैं? Therefore, on every morrow, हर सुबह, are we wreath करना, decorate with the flowers. Decorate. Flowers से हम decorate करके हम क्या बनाते हैं? ये flowery band. Why? To bind us to the earth, to attach us to the earth. So in South India, we make flowery band in front of the houses, especially in celebration, during celebrations. Why? To show that we are attached to the earth. जहां पे लोग फ्लावरी बैंड नहीं बनाते, वहां पे कम से कम एक पौधा तो लगाते घर के बाहर. Why? To see beautiful flowers, to show that we are attached to the earth. Therefore, on every morrow, we are wreathing flowery band. हम फ्लावरी बैंड रेत करते हैं, रेत करना डेकोरेट करके बनाते हैं फ्लावरी बैंड. देन
spite. Spite means घृणा, नफरत, dislike. कौन सा नफरत? सबके मन में एक स्पाइट भर गया. कौन सा स्पाइट? नंबर 1, of despondence, निराशा, disappointment. Number 2, spite of the inhuman, cruel, the earth, kami, lackness, of noble natures, noble natured people. दुनिया में नोबल नेचर्ड पीपल की कमी, सभी गंदे लोग हैं, पापियों से भरा हुआ है, कोई अच्छा लोग नहीं है. इसका स्पाइट. Everybody's mind is filled with a spite. Which spite? Spite of despondence. Number 2, spite of inhuman deeds of noble natured people, cruel lack of noble natured people. Number 3, spite of the gloomy days. दुख से भरा हुआ दिनों से हुआ spite. Number 4, spite of all the unhealthy and over darkened evil ways. लोग पूरा कैसे रास्तों से चलते हैं? अनहेल्थी एंड इविल रास्तों से चलते हैं. इससे हुआ स्पाइट. ये स्पाइट क्या करते हैं? दिस स्पाइट मेड फॉर आवर सर्चिंग. हमें ये ब्यूटीफुल थिंग ढूंढने के लिए हमें मजबूर करते हैं. देखना, every morning we are making flowery band. Why do we make flowery band? To attach us to the earth. दुनिया से हमें जुड़ाने के लिए. So what is the spite that the writer mentioned here? Number 1, spite of despondence, disappointment. Number 2, spite of cruel, इतना cruel कमी है. किसका कमी? Of good people, noble natured people. Number 3, spite of gloomy days, दुख से भरा हुआ दिनों की spite. Number 4, people are following unhealthy and evil ways. Spite of all the unhealthy and evil ways. ये हमें क्या करते हैं कि made for our searching. हमें मजबूर कर रहे search for a beautiful thing. Why? Because we know that a beautiful thing will provide us what? क्या क्या दे देंगे? अच्छा हेल्थ दे देंगे, क्वाइट पावर दे देंगे, और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स दे देंगे, एंड आरामदायक ब्रीथिंग दे देंगे. सो ये स्पाइट हमें प्रेरित कर रहे सर्च फॉर ए ब्यूटीफुल थिंग. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी some shape of beauty, some beautiful shape moves away, हटा देते हैं the pall, curtain, पर्दा from our dark spirits. हमारा डार्क स्पिरिट से ये कालापन को ब्यूटीफुल थिंग हटा देते हैं. Why are our spirits dark? Because of the spite. Which spite? Spite of despondence, spite of inhuman deeds of noble people, spite of gloomy days, spite of unhealthy and over darkened evil ways. ये चार बातों के स्पाइट हमें क्या करते हैं? मेड फॉर आवर सर्चिंग. हाँ, इन सब के बावजूद भी एक ब्यूटीफुल इमेज क्या करते हैं? रिमूव्स द पाल, पर्दा, कर्टन फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. हमारा काला आत्मा से वो कालापन को ब्यूटीफुल थिंग हटा देते हैं. तो ये ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर अवर. Its loveliness always increases. It will never pass into nothingness. What does the thing provide us? It will provide us shady boon, or sleep full of sweet dreams, or health and quiet breathing. So what do we do every morning? Every morning we are making flowery band. Why? To bind us to the earth. What is the spite that the writer mentioned here? Spite of despondence, lack of good natured people, gloomy days, and everything. Next one. What are the beautiful things that the writer mentioned here? Such, jaise the sun, the moon, trees, old and young, पेड़ पौधे. Three beautiful images. Sun,
early morning sun or evening sun कितना अच्छा लगते हैं? The sun, the moon, trees old and young. What do the trees do? Sprouting, producing shady boon. Boon means blessing. छाया का अनुग्रह दे रहे for simple sheep. What is the significance of simple sheep? It has some significance. It is a reference taken from the Bible. Since Jesus Christ is the shepherd, sheep कौन है? Common, innocent people, we people. तो innocent मासूम लोगों के लिए छाया का अनुग्रह देने वाला trees. Next, such are daffodils. Daffodils are yellow flowering plants. With the green world they live in. ये हरा भरा ग्रीन वर्ल्ड के बीच में डैफोडिल्स. अब सन आ गया, मून आ गया, हरे पेड़ पौधे आ गया, देन डैफोडिल्स. नेक्स्ट वन, क्लियर rills. Rills means a small stream, झरना. What do they do? That for themselves make, ये खुद के लिए बना रहे ये कूलिंग कवर, कूल का कवर. ये झरना, छोटा झरना जा रहे हैं, ये झरना अपने आप को एक एसी एयर कूल बनाकर रखा है. ऐसे क्योंकि इनके दोनों तरफ देख लीजिए कूलिंग कवर. ये अगस्त द हॉट सीजन, ये हॉट सीजन के अगस्त में अपने आप को ठंडक बना के रखा है. कारण द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मींस झाड़ी, थिकेट झाड़ी, रिच विथ, ये पूरा रिच है, संपन्न है, पूरा भरा हुआ है. विथ स्प्रिंकल, स्प्रिंकल करना, इधर तो डालना, वो फेयर ब्यूटीफुल मस्क रोज, कस्तूरी रोज, ब्लूम फ्लावर्स. अंडरस्टूड? एक छोटा सा झरना, ये झरना अपने आप को कूल करके रखा है क्योंकि ये दोनों तरफ पूरा मिडिल फॉरेस्ट ब्रेक, झाड़ियां हैं दोनों तरफ, ये झाड़ी पूरा ये झरने को कवर कर रहे हैं. सो द स्ट्रीम्स मेक themselves a cooling cover. देन ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है विथ फेयर ब्यूटीफुल मस्क रोज फ्लावर्स, कस्तूरी flowers. So right here described different kinds of beautiful images on the sun, moon, old and young trees. What do trees do? Producing shady boon for common people. Then daffodils. Where do daffodils live? In the green world. Then clear rills. ये rills क्या कर रहे हैं? अपने आप को कूल कावत बनाते हैं अगस्त द हॉट सीजन. How? With mid forest break. ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक पूरा संपन्न है विद स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्यूटीफुल मस्क रोज फ्लावर्स. तो राइट, सन के बारे में बताया, मून के बारे में बताया, डैफोडिल्स के बारे में बताया, और ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और मस्क रोज फ्लावर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन राइट फाइनली सेज ये कौन ब्यूटीफुल थिंग के बारे में देखो, एंड सच टू, ये भी क्या है? द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स. ग्रैंडर मीन्स मैग्निफिकेंस, वैभव. किसका वैभव? ऑफ द डूम्स. डूम मीन्स डेड, मरा हुआ चीजों की वैभव. मरा हुआ चीजों में क्या वैभव होते हैं? हाउ इज ग्रैंडर कनेक्टेड विथ डूम्स? दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. How is grandeur associated with death? Because the writer describes the death of martyrs. हमारे लिए जीवन बलिदान के शहीदों की डेथ के बारे में बताए. Their death is always magnificent. That is why magnificence, grandeur is connected with death. We have imagined for the mighty dead. Mighty dead are those people who sacrificed their lives for the nation. शहीदों के बारे में बता रहे.
All lovely tales we have heard or read, हमने जो पढ़ा सुना हर एक प्यारे कहानियां, किसकी कहानियां? Mighty dead का कहानियां. Who are the mighty dead? Mighty dead are those people who dedicated, sacrificed their lives for the nation. ये कहानियां पढ़ने से क्या होतेगी? And endless fountain means falling of any good. Endlessly fountain of what fountain? Immortal drink. What is that? That is Amrit. Amrit endlessly गिर रहे, pouring unto us, हमारे पर डाल रहे, from the heavens brink. Brink means edge. स्वर्ग के किनारे से आपके ऊपर endlessly अमृत गिरने के समान है. Reading the stories of mighty dead. बाकी नॉर्मली एक ब्यूटीफुल देखेगा तो what benefit do we get? वो तो हम पहले डिस्कस किया. The writer here says that the stories of mighty dead, the heroic deeds of mighty dead are better than any other beautiful thing. ये कहानी पढ़ने से क्या होतेगी? And yet it is just like pouring immortal drink endlessly unto us from the heavens brink. So the name of the poem is A Thing of Beauty. Poet John Keats. He is a British romantic poet. This part is taken from another book. The name is Endymion, a poetic romance. Endymion. So in this beautiful poem, the poet John Keats describes about the beautiful aspects of a beautiful thing. सबसे पहले ये beautiful thing का importance के बारे में बताया, then इसका benefit के बारे में, then how a beautiful thing is attached to our life, what are the beautiful things in the world, और इसमें से सबसे beautiful thing कौन सा है? Look at these questions. What are the significances of a beautiful thing? It is a joy forever. Its loveliness always increases. Number 3, it will never pass into nothingness. It will never pass into zero. It means that you will get something when you see a beautiful thing. When you enjoy a beautiful thing, आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा. What does a thing of beauty provide us? A thing of beauty provides us shady bower, sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing. What do we make every morning? Every morning we are raising flowery band. Why? To attach ourselves to the earth. What is the spite that the poet mentioned here? Yes, writer, ये poet के अंदर कुछ spite के बारे में बता रहे. Number 1, spite of despondence, disappointment, निराशा. निराशा से हुआ spite. Number 2, spite of the earth, inhuman, cruel the earth कमी. किसका कमी? Noble natured people. Number 3, spite of gloomy days. हमारे दिन कैसे चल रहे? दुख से चल रहे, दुखों से भरा हुआ दिनों से हुआ spite. Number 4, unhealthy and evil ways. उससे हुआ spite. So what does this spite force us? This spite forces us to search for a beautiful thing. क्योंकि हम जानते हैं कि beautiful thing से हमें क्या क्या लाभ मिल जाते हैं. What are the beautiful things mentioned in the poem? Sun, moon, old and young trees, daffodils, clear rills, and mid-forest brake rich with fair muscovos flowers. Then, what do trees do? Trees produce shady boon for simple sheep.
What is the significance of the reference simple sheep? Simple sheep, it is a reference taken from the Bible. Since Jesus Christ is referred to the shepherd, the common innocent people are the sheep. ये साधारण innocent मासूम लोगों के लिए छाया देने वाला ट्रीज. Why is grandeur associated with death? Writer mentions the death of heroic people, martyrs, who have dedicated their lives for the nation, who have sacrificed their lives for their nation. Their death is always magnificent, not art. What blessing do you get with the stories of mighty dead? Who are they? Mighty dead are those people who sacrificed, dedicated their lives for the nation. And what blessing do you get with the stories of such people? It is just like enjoying immortal drink. It is just like pouring immortal drink unto us from the heavens brink. So I think you have got a clear picture about this beautiful poem. Let us discuss the next part in the next session. Thank you.